we went through core values. So under core objective, second thing is core purpose. Yes. So core purpose is your reason for existence. Yes, is your reason for being. So 3M, for example, to solve unsolved problems innovatively. To solve unsolved problem innovatively. This is their core purpose. So that's why 3M has more than 60,000 products. So they are not focusing on the one industry, but they are focusing. They want to resolve the unsolved problem. इनकी टेलीकॉम प्रोडक्ट्स भी हैं, इनकी ये स्कॉच ब्राइट भी है, इनकी एफएमसीजी की प्रोडक्ट्स भी हैं, इनकी टेक्निकल और प्रोडक्ट्स भी हैं, लाइक इनके फाइबर वो भी आती है, इनकी पैनलिंग भी आती है, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह मर्क इज अ मेडिसिन कंपनी। टू एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ कंपटीशन, विनिंग एंड क्रशिंग, sorry, this is Nike. To experience the emotion of competition, winning and crushing competitors. Merck में to preserve and improve human life. Yes? Yes. So this is just an example of core purpose. Walmart to give ordinary folk the chance to buy the same things as rich people. Walmart is a departmental store and they claim they are discount store. Yes? Yes. Now example for all this objectives and BX, immediate future. Core ideology, core values, purpose, BX and vivid description for Sony in 1950s. We studied this before as well in that article when we were studying that and we discussed that elevation of core values, elevation of Japanese culture and national status. The core value was elevation of Japanese culture and national status. Being a pioneer, not following others, doing the impossible. Doing the impossible. Encouraging individual ability and creativity. You see, they have only 3 core values. When your core values are more than 5, it means you are not clear. Your core values should be minimum. It can be 3 as well. It depends how much clarity you have. Right? When you have only 3 core values or 2 core values, it means you are pretty clear about what you want. Yes? आप चाहते क्या हो, आप उसमें टोटली क्लियर। कोर वैल्यूज तो वो होती हैं, वो वैल्यूज जो कि आपके कंपटीटर की उसमें आपकी अच्छी हैं। नहीं, जो डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स हैं आपके। तो अगर हमारे 5 से ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स हैं, नहीं, आप देखें, आपने अपनी डायरेक्शन डिसाइड करनी होती है, ठीक है? आप उसमें बेस्ट उठा लेते हैं, सही है? अब इसी तरह कोर पर्पस है, तो कोर पर्पस देखें इस तरह, तो आप कहेंगे आपको बहुत सारे कोर पर्पसेस हो सकते हैं, बट नॉट। व्हाट इज योर फोकस? यू हैव टू बी समवेयर। अगर आपके ज्यादा है तो इसका मतलब इसीलिए तो कहा है कि आप कंफ्यूज हैं, यू आर नॉट डिसाइसिव। आप अगर इस कंफ्यूजन में हैं कि आपका कोर पर्पस क्या है, तो उसके बाद की बात कहां पे आएगी? इसीलिए तो ये स्टेप्स रखे हैं, ये स्टेप्स डिफाइन किए, इसलिए कि आप विजन बना सकें। You can build your vision from these points. I mean, this is activity to build your vision. उसके बगैर आपका विजन भी फिर कभी वो कोर पर्पस उसका एंटरटेनमेंट होगा, और कभी उसका कोर पर्पस ह्यूमन लाइफ होगा, कभी उसका कोर पर्पस क्रशिंग द कंपेटिटर्स होगा, नाइकी वाला। ठीक है? तो आपका कोर पर्पस के लिए कोर पर्पस की क्लैरिटी कब आएगी? जब आप कोर वैल्यूज में आएंगे। कोर वैल्यूज और कोर पर्पस की क्लैरिटी होगी, फिर आप आगे लेके जा रहे हैं, आपको फिर एनविजन फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे हैं। आप देखें कि आपको विजन डेवलप करने के लिए आपको पहले करंट सिनेरियो
what you are, what is your purpose, then what will be your future. सही है? Purpose क्या है सोनी का? In 1950s, please be focused on 1950s. To experience the sheer joy of innovation and application of technology for the benefit and pleasure of general entertainment. B है become the company most known for changing the worldwide poor quality image of Japanese products. Yes, they want to change the image of poor quality Japanese products, and they successfully changed it. You know it. Yes. Vivid description. We will create products that become persuasive around the world. We will be the first Japanese company to go into US market and distribute directly. We will succeed with innovation that US companies have failed. As such as the transistor radio, blah blah blah. So you see कि ये काम भी सारे हुए. वो कब होते हैं? You know, जब आप अपनी चीजें डिफाइन कर रहे होते हैं, वो कब सक्सेसफुल होती हैं? When you are pretty clear. When you are not clear, then you will not exist. After this, we studied reinventing your business model. Remember? Reinventing your business model. These are the elements of successful business model that we studied in that SBR article. CVP, Customer Value Proposition. What is CVP? Customer Value Proposition क्या होती है? What's your idea? क्या होती है जी Customer Value Proposition? Customers के अकॉर्डिंगली चलते हैं और any other idea? कस्टमर की नीड को फोकस किया जाए, कस्टमर की डिमांड को फोकस करते हैं. कस्टमर चाह क्या रहा है और हम दे क्या रहे हैं. कस्टमर चाह क्या रहा है और हम दे क्या रहे हैं. कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का सेम वैल्यू, अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर के मुताबिक अरेंज करना. बिल्कुल सही. देखिए इट मींस बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने. The propositions that you are bringing from customer and introducing your product. You are absolutely right. कि जो आप कस्टमर की नीड और डिमांड से अपनी प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, दैट इज योर कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन. ओके, अब इसमें आगे है देखिए प्रॉफिट फार्मूला. प्रॉफिट फार्मूला में अली, प्रॉफिट फार्मूला में आप क्या क्या चीजें देख रहे होते हैं? Yes, your revenue, your cost, margin, your margin और cost element. Good. Okay, resource velocity. अच्छा, इसके बाद इसकी सेकंड पॉइंट क्या था कि रिसोर्सेज. रिसोर्सेज में यू ऑल नो कौन कौन सी चीजें आती थी रिसोर्सेज में? टेक्नोलॉजी, पीपल, प्रोसेसेस जिसमें डिजाइन, प्रोडक्ट ऑपरेशन, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, नॉर्म्स, yes, sourcing, rules, blah blah blah. So you need to reinvent your business model. You need to work on your business model according to this model. ठीक है? इसमें we have example as well. तो ये नहीं पढ़ी. ये उस आर्टिकल में थी, आपने नहीं पढ़ी होगी, आपने शीट भी लाए होंगे. ट्रेडिशनल पावर टूल कंपनी और खेती जो जिसकी ये एग्जांपल है उस कंपनी के बारे में बताया गया. अब देखिए ट्रेडिशनल कंपनी मॉडल कैसे चेंज हो रहा है, बिजनेस मॉडल कैसे चेंज हो रहा है. दिस इज जस्ट रिव्यू. यस सर. रिमेंबर
अगर हम पूरा आर्टिकल पढ़ रहे हो तो देन वी विल गो इन डेप्थ। इसीलिए उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जिससे आपको वो रिव्यू हो सकता है, आई इंक्लूडेड ओनली दोस थिंग्स इन दिस सेशन। ट्रेडिशनल कंपनी क्या करती है? दिस इज अ टूल मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज अ टूल कंपनी जो बहुत एक्सपेंसिव टूल्स है। ट्रेडिशनल कंपनी क्या करती है? देयर कस्टमर वैल्यू प्रॉपोजिशन इज sales of industrial and professional power tools and accessories। हिल्टी एक कंपनी है, इसके स्टडी में इस कंपनी ने क्या किया? They started leasing up things, leasing a comprehensive fleet of tools to increase contractors on-site productivity। The main purpose was they were attracting contractors who can't invest in purchasing of the tools, right? So basically they enhance their market as well। Profit formula for it, for this traditional company: low margin, high inventory turnover। In that case, whenever you are getting something on lease, on rent, you are paying extra। Your margins will be high, asset heavy, monthly payments for tool maintenance, repair and replacement। Actually they were charging specific category of cost, that was payment for tool maintenance। So that is additional to your cost। Okay, key resources and processes: distribution channel, low cost manufacturing plant in developing countries, R&D। And what were they doing? Strong direct sale approach, like Dell, strong direct sale approach, contract management, IT system for inventory management, repair, warehousing, blah blah blah। इसके बाद we studied external assessment। external assessment में क्या था? Opportunities and threats। Basically you analyzed opportunities and threats। So what was external assessment? Basically you were assessing those things, you were assessing opportunities and threats। So external assessment focuses on identifying and evaluating trends and events beyond the control of single firm। External things, opportunities and threats are not under your control, under your organization's control। That's why it's saying focuses on identifying and evaluating trends and events beyond the control of single firm। Second, reveals key opportunities and threats। Did you want to say something? Reveals key opportunities and threats confronting an organization so that managers can formulate strategies to take advantage of opportunities and avoid or reduce the impact of threats। Basically at formulation stage you take advantage of external opportunities and avoid or minimize the external threats। Porter's 5 forces। Remember? Yes, sir. Porter's 5 forces। Yes, any volunteer who can explain Porter's 5 forces? We discussed in detail actually। Yes, please Hari। बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो डिफरेंट चीजें इंप्लीमेंट करी थी, जैसे कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर है, एंड थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री है, और सब्स्टिट्यूट का जो थ्रेट है, ये चीजें जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, ये उसकी डिस्कशन है कि वो किस तरह से इफेक्ट करती है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। अच्छा जी, क्या कोई ये बता सकता है कि इस तरह बैरियर टू एंट्री होता है, इसी तरह यू हैव बैरियर टू एग्जिट? Yes. Is there any situation when you have no barrier to entry but there is barrier to exit? आपने एग्जांपल देते अगर गाड़ी की वारंटी देते हैं अगर उसको ये फिर हम उसको
spare parts of Yes. Similar is the case with investment banking as well. Yes. Yes. You have investments of different people. You can't exit immediately. There is barrier to exit. Yes. So, one is bargaining power of consumers, suppliers, potential entry of new competitors, and potential development of substitute products. We have discussed it in detail, so I'm not discussing it again. Internal strengths and weaknesses, internal assessment. Yes, controllable activities perform specially well or poorly. Yes, they are controllable because these are your strengths and your weaknesses. Determined relative to competitors. Internal factors कहाँ से reflect होते हैं? Your financial ratios, your performance measures, industry averages, and survey data. For internal assessment, you will collect information from your departments, management, marketing, accounting, finance, production, operations, R&D, MIS. It's spelling mistake, but it's Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy. You remember Blue Ocean Strategy? Yes, sir. Good. Blue Ocean Strategy. What's the difference between Blue Ocean and Red Ocean? Sir, बता दें। रेड ओशन होती है कि एग्जिस्टिंग मार्केट में आप कोई नई चीज लॉन्च कर रहे हैं या कुछ नई नीड जनरेट कर रहे हैं। रेड ओशन एग्जिस्टिंग जहाँ पे एक्स्ट्रा कंपटीशन होता है उस मार्केट में इन दोनों रेड ओशन स्ट्रेटजी होती है और जहाँ पे आप कंपटीशन नहीं इग्नोर करते हैं न्यू मार्केट Create a new market जो है वो that is Blue Ocean. तो मैं रेड ओशन बता रहा हूँ एग्जिस्टिंग मार्केट में आपको नई चीज क्रिएट करनी है। जब आप एग्जिस्टिंग मार्केट में फंक्शनल होते हैं तो इट मींस कि आप रेड ओशन में व्हेन यू आर मोर कंपेटिटिव उसमें आप बहुत कंपेटिटिव होते हैं। गुड, कंपटीशन हाई होता है। और ब्लू न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट और प्रोडक्ट जो है वो उसमें कोई न्यू फीचर्स है। न्यू मार्केट ओके सर इसमें मैं इनोवेशन आती है। करियर असाइनमेंट में जो ब्लू ओशन वाला पार्ट है उसमें वैल्यू इनिशिएशन और एडिंग फोर्थ ब्रेन एक्शन तो वो चलिए we will discuss it. So Red Ocean and Blue Ocean strategy, you understand what Red Ocean and Blue Ocean strategy है? इसको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था। This is a small comparison. इसमें वही बातें लिखी हुई हैं जो आपने अभी बताई। Compete in existing market space, create uncontested market space. So what happened actually when you are in Blue Ocean? You will be a market leader. And you will have more space to earn profit margin. And yes, about 10 to 15 years, you will have margin जिसमें आप अकेले successfully play कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई competitor आता भी है तो because you have created Blue Ocean. Like maybe you have heard, Amazon has launched a superstore. Yes, I shared it on my FB page. हमारा प्लान भी स्ट्रेटजी को रिप्लेस भी किया। अच्छा, Amazon has launched a superstore, and what they did actually, you don't need even credit card, you don't need even cash to pay anything, you don't need even to interact with anyone. Yes, sir. You just Go and pick the product. yes, you just go to the store, you pick up your thing, you will get out from the store Yes. without paying. What happened? Actually, you need only Amazon account, Amazon application to be downloaded in your phone. Yes. You will log in that account, you will enter the store, you will pick up things, you will get out, and Amazon store will automatically detect
whatever you have picked up from your that login account from your phone, and you will be charged against that from your account that is with Amazon. सर गेट से बाहर निकल कर उससे पहले जब आप रिटर्न कर देंगे वो आपको फिर वो आपका अकाउंट वापस आपको Yes, absolutely. So you did your project on that. Good. ये बारकोड भी आता है तो बारकोड No, not barcode. यूज पे आ रहा The video I have seen, उसमें emotion maybe it's something like that. But ये आपने अगर उसको project किया तो मैं भी देख लेंगे. Yes, please. Attention. गेट के अंदर ही बैठे बैठे चिप्स खा रहे हैं वो आपने उसको क्लिक किया शर्ट से तो वो आपके अकाउंट वो आपके account में आ जाएगा. Yes. मैं वो वापस रख दूंगा नहीं ना भूल गया आप Okay. Strategy in action. Long-term objectives, please. अगर अकाउंट में पैसे ना होगा इनका भी प्रोजेक्ट इसमें बात लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक रिजल्ट्स. देखिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स किस लिए होते हैं? टू अचीव योर विजन. टू अचीव मिशन Yes, but this part of that, because your vision will come from your vision. Specific results that an organization seek to achieve pursuing its basic mission. Long term means more than 1 year. Benefits of having clear long term objectives. Provide direction by revealing expectations, allows synergy, aid in evaluation by serving as standards. Or ji, what's your idea? Yes, girls. Conflict minimize हो जाते हैं. When you have long-term objectives, it means you have clear direction. And if you have clear direction, there are minimum chances of conflicts because everybody knows this is the way you need to go. Yes, sir. Or ji, हाँ? Risk कम हो जाता है. Yes, you are absolutely right. Uncertainty, you reduce uncertainty or risk. Absolutely. Decision making makes it helpful. Job design. Good. So there are different strategies जो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में भी स्टडी की थी. वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज, उसमें कौन कौन सी है जी? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन. व्हाट यू डू बेसिकली इन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन? Forward integration. Yes. Ownership of what? Of distribution. Control of distribution. Direct selling. Yes. इसमें क्या है कि आप कंट्रोल लेने का कोशिश करते हैं towards your retailers. Gaining ownership or increased control over distributors or retailers. In case of backward integration, you are moving backward to suppliers. You want to gain control of suppliers, seeking ownership or increased control of the firm's supplier. Intensive strategies: market penetration, market development, product development. What is market penetration? Yes. Existing market और existing product को ही मतलब कि आप मार्केटिंग एफर्ट से उसके मार्केट शेयर इंक्रीज करने की कोशिश करें. ओके, मार्केट डेवलपमेंट. आप मार्केट को इंक्रीज करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, डू यू हैव एनी लोकल एग्जांपल फ्रॉम पाकिस्तान? मार्केट मार्केट डेवलपमेंट.
सर ये हम डॉक्टर ने स्कूटी जो की है This is not market development. सर ये बिलो से कैटेगरी आ रही है जो Government and market development they initially launched in Lahore, then they launched in Islamabad, Faisalabad, Gujranwala, blah blah blah. Barrier town. That's market development. DHA market development. वो आते हैं. ऊपर and Kareem is blue ocean when they were entering into Pakistan. Yes, sir. Yes. सर करीम ने भी ये मार्केट डेवलपमेंट कर दी है करीम गुजरांवाला और Yes, फैसलाबाद that's market development. Good. Product development. Product development. Innovation. Huh? Improving sales. Seeking increased sales by improving present product or service or developing new one. Value addition. लेकिन आप या तो प्रोडक्ट को यूज करते हैं जैसे आप you can take example of iPhone. Every time they launch new product, yes, they actually they launch new basically addition in previous product. ठीक है, तो वो न्यू प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे होते बल्कि वो प्रेजेंट प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, प्रेजेंट प्रोडक्ट को इंप्रूव कर रहे होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी मार्केट जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट. सर सैमसंग करता है न्यू प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट भी देखिए वो यही है ना कि आप अगर नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई नया फोन लॉन्च कर देते हैं विद न्यू फीचर्स, तो दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट विद न्यू वन. एंड इफ यू आर इंप्रूविंग योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उसमें एक दो फीचर ऐड कर देते हैं, तो दैट इज विद इंप्रूविंग योर प्रोडक्ट, दैट इज आल्सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट. जस्ट लाइक गवर्नमेंट मार्केट आ रही है उसकी करनी वो चाहिए सर हमें 2016 मॉडल ये 2017 प्रोडक्ट डेवलपमेंट है कि इसका आगे एग्जांपल आ रही है डाइवर्सिफिकेशन. यस, diversification strategies. There are two things. One is related diversification, one is unrelated diversification. When you are adding something new that is related to your product or service that you are already providing. Yes, that is related diversification. But if you are providing something that is not related to your existing business, कोई new चीज, that is unrelated diversification. जैसा आपने अभी कहा गोरमे, तो गोरमे when gourmet was into bakery, it was okay, but when they entered into furniture, then it was unrelated diversification. When they entered into ambulance, unrelated diversification. When they entered into medicine, pharmacy, it was unrelated diversification. Catering, sir. Catering. Defensive strategies. Retrenchment, divestiture, liquidation. We discussed in class last time. Yes, sir. ये डिस्कस किया. Retrenchment. Yes, regrouping through cost and asset reduction to reverse declining sales and profits. Divestiture, selling or division or part of an organization. Yes, sir. Basically, you are selling your division of your organization, a part of that organization, or specific product. Yeah, the part of the organization. ये दे दे किसी के लिए. Thank you. Liquidation. Selling all the company's assets in parts for the tangible loss. Total business sell कर देते हैं, तो that is you have liquidated your business. Retrenchment. Regrouping through cost and asset reduction to reverse declining sales and profits. Your company or your business is basically declining in sales, declining in profits. What are you doing? You are regrouping your products. You are regrouping your departments. For example,
you have one department who is managing Lipton, Supreme, no, not Ipal is different company. Cosmetics. You have one department for this. But when you are declining into sales, you will regroup your team as well. आप उसमें अलग अलग ग्रुपिंग कर देते हैं, कॉस्ट के हिसाब से, प्रॉफिट्स के हिसाब से, मार्जिन के हिसाब से। आप ये एक डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल आप तीन एक डिपार्टमेंट में थे, एक अम्ब्रेला के अंदर 3 डिपार्टमेंट काम कर रहे थे, आपने उन 2 को इकट्ठा कर दिया और एक को किसी और के साथ मिला दिया, या एक को अलग कर दिया, एक डिपार्टमेंट बड़ा हो गया, तो इट्स नॉट डाउन। आपकी कोई रीजन है ना कि आपकी सेल, उसमें कोई भी रीजन हो सकती है, बट उसमें इसमें मेन फोकस जो है ना वो ये है कि आप उसकी बेस पे रीग्रुपिंग कर दें। यस, बट अगर आपकी सेल्स डिक्लाइन कर रही है तो उधर किसी वजह से कॉस्ट इंक्रीज होने से आपकी सेल संभाली जा सकती है, तो प्लीज यू वांट टू रीफोकस ऑन दैट। बेसिकली यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर बिजनेस, यू वांट टू रीट्रेंच होता क्या है? रीट्रेंच होता है उसको रिकंसाइल करना। यस, अब मार्केटिंग के लोग बैठे हुए हैं, क्या होती है जी रीट्रेंच की? ओके, फिश मार्केट में स्टेज 1 comprehensive strategy formulation framework, input stage, matching stage और decision stage। ये हमने लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस हुआ था। यस सर हुआ था, बट हमने हैंडल किया हुआ था, हल्का सा रिव्यू किया। यस, वो इतना ही होता था। स्टेज 1 में, इनपुट स्टेज में EFT मैट्रिक्स हमने शुरू में पढ़ा, इनपुट IFT मैट्रिक्स, CPU मैट्रिक्स that is competitive, stage 2 matching stage, SWOT, space matrix, BCG matrix, IE matrix, grand strategy matrix, and third is decision stage। decision stage में क्या थी? QSPM, quantitative strategic planning matrix। ओके, ये लास्ट इसमें अभी तो मैं वो स्लाइड नहीं इसमें शामिल की हुई मैंने, लेकिन इसमें होता ये है कि जिस तरह आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, आप स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को लिस्ट डाउन करते हैं, उसके बाद आप उसके अगेंस्ट वेटेज देते हैं, किसकी कितनी वेटेज है, जिस तरह आपने EFT में और IFT में किया, ठीक है। उस वेटेज के बाद आप उसको रेटिंग देते हैं, जिसको उसने AS का नाम दिया है यहाँ पे। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप स्ट्रेटजीज बताते हैं, स्ट्रेटजी 1, स्ट्रेटजी 2, स्ट्रेटजी 3 टू कैटर दैट स्पेसिफिक थ्रेट और स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी। यस, और स्ट्रेंथ और वीकनेस, उसके अगेंस्ट जो स्ट्रेटजीज हैं आप 3 स्ट्रेटजीज लिस्ट आउट करते हैं, ताकि जो भी आपकी स्ट्रेटजी हो, स्ट्रेटजी नंबर 1 जैसे आपने कहा था ना, ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी जो वो आप इस मॉडल में करते हैं। स्ट्रेटजी 1, स्ट्रेटजी 2, स्ट्रेटजी 3, सही है? यस। आप पहले कौन सी इंपॉर्टेंट है उसको स्ट्रेटजी 1 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। ये उसी की आगे स्लाइड्स हैं कि उसमें कौन कौन सी चीजें हैं वो अभी हमने डिस्कस कर लिया। इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर 5 तरह की चीजें हैं। वन इज मैनेजमेंट इश्यूज, ऑपरेशन इश्यूज, मार्केटिंग इश्यूज, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इश्यूज, MIS इश्यूज, ब्ला ब्ला ब्ला, और जो भी डिपार्टमेंटल इश्यूज होते हैं। अब देखिए, कंपैरिजन ऑफ फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, राइट? अब फॉर्मुलेशन में क्या करते हैं आप? You have positioning forces before the action. You are positioning forces before the action. अभी comparison आएगा तो you will understand. Focus on effectiveness.
formulation में, when you are working on strategy formulation, you are focusing on effectiveness, primarily intellectual, because this all is based on discussion, this all is based on previous experiences, this all is based on brainstorming. Yes, this all is based on your board meetings. Requires good intuitive and intellectual skills. Requires coordination among few people, because there are only few people who are, participating in formulation of strategies. Yes. Then implementation stage. Now make comparison. Positioning forces before the action. You are positioning forces before the action. Now you are managing forces during the action. In that stage, you were not acting actually, but now you are into action. Yes? In that case, focuses on effectiveness. Now you are focusing on efficiency. In that stage, you are primarily intellectual, primarily operational. It requires good intuitive and analytical skills. Requires special motivation and leadership skills. Just keep it in mind, you are implementing. Yes, when you are implementing, so you need people's motivation and leadership. Requires coordination with few people, coordination with many people. Because now when you are formulating your few people, when you are implementing, you are plenty of people. So basically, you are converting, you are shifting responsibility from strategists to functional managers. Yes, you are shifting responsibility from strategists to divisional functional managers. So these are some management issues that you face while implementing. Establish annual objectives, devise policies, allocate resources, alter existing organizational structures, restructure and re-engineering. Think about it. I mean, when you have redevised your strategies, then you need to revisit your annual objectives. Then you need to reallocate your resources. You need to refocus on your organizational structure, blah blah blah. And you need to minimize the resistance to change. Minimize resistance to change. You remember your activity that we done a day before? Yes, sir. Change. Yes, sir. When I asked you to make 5 changes within you, Yes, sir. 5 changes. When I told you to, do 10 changes, some people were saying it's impossible. We can't do it, but we did it. So, yes. So it's important to minimize the resistance to change. What is the formula to minimize the resistance to change? Translate your vision from upward to downward. When your vision upward to downward is clear, then resistance to change will be minimized. Yes, sir. When you have participation from each department, when you are actually formulating the strategies, then you would be in a better position to minimize the resistance to change. Because you have representative of each and every department, so that representative will clear those strategies, those changes to him or her department. When it's clear, it would be easy for everyone to own those changes, because he or she or the part of that team was part of that strategic team who were actually making changes. Operational decision example. When you are into operations, then when you are implementing strategies, so your each and every department is involved in that strategy. Yes? Main phase was formulating strategies, but when you are implementing strategies, each and every department, whatever that department is,
operations, manufacturing, service, HR, finance, accounts, each and every department. So each and every department have some issues when you are implementing those strategies, right? So you need to address those issues. Production decisions में plant size, inventory control, quality control, cost control, technological innovations, blah blah blah. Now marketing. Okay, because these are the main subjects and these are the prerequisites that you have studied before this course. So I will not go in depth of these departments, what these departments are or what these functions are, marketing, finance, accounts, R&D and M&S. But we will of course go through this. This is a quotation which is saying the greatest strategy is doomed. The greatest strategy is doomed if it's implemented badly. If strategy is excellent, but it's implemented badly, it will be a disaster. It will not have any effect, but it will have a negative effect most probably. सर ये एयर चैप्टर है ना यहाँ पे नहीं करता Yes, इसी में सारा प्रॉब्लम है. Okay. Nature of strategy implementation. Yes, sir. When you have some quotations, so we can't change the words that they have used. Less than 10% of strategies formulated are successfully implemented as per one research, because most of the times the people who have formulated strategies, they lose their interest during implementation, because we have formulated strategies, not your part to implement it, but actually their part is needed when you are implementing. So this is one of the reasons. The other reason is you are not reviewing it time to time. Yes, sir. Yes? सर 10% में फिर वही लोग हैं ना जो पूरी इन्वेस्ट कर रहे हैं और पूरी इसको Not necessarily. Not necessarily. Most probably they have team who is following it up. और वो लोग सक्सेसफुल नहीं आ सकते हैं जो उसको प्रोबेबली उस तरह से सक्सेसफुली कम्युनिकेट नहीं कर पाते. देखिए, sometimes you have more discussion, more comprehensive discussion or brainstorming when you are formulating, but when you are communicating, you are not clearly communicating to lower level who is actually implementing. Yes. Marketing issues. You know all these marketing issues. I don't need to explain it one by one, but to limit or not to share the business with single customer, price leader or price follower, offer complete or limited warranty, blah blah blah. Marketing issues that marketing department have to decide what to do. Current marketing issues, advertising media, purpose-based marketing, segmentation. Okay. Now the stage comes for strategy review, evaluation and control. Evaluation and control. When you have formulated strategy and implemented strategy. You have implemented strategy, but if you are not reviewing it time to time, maybe the environment or nature of the company is changed at that time. Then it's again not useful. You have implemented, but you have not reviewed those strategies time to time. In what direction now company is going? Now what's the main objective? Either you are going into that direction or not. अगर आप उसे टाइम टू टाइम रिव्यू नहीं करते तो तब भी वो यूजफुल नहीं है. So तीनों stages, all three stages are important. Formulating, implementing, and yes, reviewing, evaluation. The best formulated and best implemented strategies become obsolete as the firm's external and internal environment change.
Your external environment has changed totally. The mindset who made those or who formulated those strategies, at that time situation was different in external environment. Now the situation is different. You need to review your external environment, internal environment situation and review your strategies or your implementation in accordance with those situations. And if you are not evaluating your strategies according to those situations, then you have implemented, but your external or internal situation is changed, so it's obsolete then. Therefore, it is essential for strategists to systematically review, evaluate, and control the execution of strategies. Okay, strategy evaluation is vital to an organization well-being. Timely evaluation can alert management to potential or actual problems before the situation becomes critical. So timely evaluation, yes. So strategy evaluation includes three activities, three basic activities. Examining the underlying basis of a firm's strategy, comparing expected results to actual results. Yes, you're getting it? Yes. Examining the underlying basis of firm's strategy, comparing expected results to actual results, taking corrective actions to ensure that performance controls the plan. 3 steps. Okay, last one. This is strategy evaluation framework. This is last slide which I want to discuss. Review underlying basis of strategy. First of all, you will check either you are doing as per in accordance with the market, in accordance with the environment, in accordance with the company strategy. If do significant difference occur, If no, you will move to corrective action. If yes, you will move forward. Measure organizational performance. Yes is no. पहले आ जाए दोनों पे, उसके बाद उसका. You will review underlying strategy. If there are some significant differences, no. If no, you will move to next step, that is organizational performance. You will measure organizational performance. Do significant differences occur? Again, if no, you will continue the present work. If yes, at any of the stage between two. If yes at first stage, corrective action. Yeah, arrow is set, you will again come here, move here, and that's it. Again go to 1. Yes. And if your yes is over here, corrective action. yes, जहाँ चेंजेस हुई हैं उससे पिछले स्टेप पे जाइए. Yes. वो आप जो अभी तक हमने डिस्कस किया कि आपकी एवेल्युएशन उस एनवायरनमेंट के उस चेंजेस के मुताबिक है कि नहीं. If yes, you will move to correction. If there is no significant difference, then you will go on. If there is significant difference, you will go back to corrective. जो उस एनवायरनमेंट में उसको फोकस करते हुए आप corrective action लेंगे कि now your strategy should be changed or not. Then you will go again to previous step and then move on. Thank you. So this was strategy.